Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of October. The session will be quite interesting and important, and in this video we will be discussing about various foundation stone and various projects that has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Hazirabad, Jharkhand. Then we will be talking about an internship scheme of Prime Minister Narendra Modi for 2024. Then we will be talking about Vayu Veer Vijeta car rally to mark the 97th anniversary of Indian Air Force. Then Ministry of Labor and Employment and Amazon, they have signed a memorandum of understanding to enhance the employment accessibility in India. We will be discussing all these things in detail. In this video, a total of 15 important current affairs will be discussed of utmost importance. Alright, also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe as we are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Now students, we are talking about national affairs first. In this, remember Prime Minister Narendra Modi, he has laid the foundation stone and has inaugurated various projects in Hazaribagh, Jharkhand. Right, first thing. So, where did he inaugurate it? It was in Jharkhand. In Hazaribagh, Jharkhand. Right, he has launched here Dharti, that is, let me give you the short form, DAG Gua. Daj Gua, that is Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan. This has been launched with an outlay of 79,156 crore rupees. Right, what is this scheme about? Let's talk about this first. This scheme basically will cover almost 64,000 villages that will be benefiting more than 5 crore tribal people in 549 districts of Jharkhand. The aim of this scheme is basically to fill the gaps in the social structure, the health, education and so on. Correct? So coming back, this Dajgwa scheme has been launched in Jharkhand by Prime Minister Narendra Modi, and the basic aim of this scheme is basically to help the tribal communities in providing social infrastructure, education, the basic facilities, right? That are your education, health, social infrastructure and so on. Then apart from this, remember, we have seen Dajgua, right? Then next is your projects under PM Janman scheme has been launched, right? This includes PM Janman scheme, right, in which you will be seeing 1380 kilometers of roads, 120 Anganwadis, 250 multi-purpose centers and 10 schools hostels has been inaugurated here, under the Janman scheme. Also here, remember, PM Narendra Modi has unveiled a landmark achievement under this scheme that includes electrification of more than 75,800 households. Electrification means providing electricity connections to those households, and you will be seeing that operationalization of more than 275 mobile medical units. That means this is related to health. Right, these medical units, these Anganwadi centers are basically to provide free of cost treatment to the individuals. Right, then next, remember, government has launched Prime Minister Internship Scheme only, right, 2024. Under this scheme, this is an internship scheme that will be helping people to get the practical knowledge
about the field they want to start their career in, right? It is CII, that is Confederation of Indian Industry. They have collaborated with Ministry of Corporate Affairs to roll out this scheme, that is PM internship scheme for 2024, and this has been launched on a pilot basis. Pilot basis means it has been launched on trial basis, and this is for 2024 to 2025. This aims, or this basically PM internship scheme aims to provide internship to 1.25 lakh Indian youth, and for this 800 crore rupees of budget has been allocated. Apart from this, you will be seeing the aim of this PM internship scheme is to generate 1 crore internships by March 2029, and it will provide financial assistance of 60,000 rupees per annum over a period of 5 years. So we can say if we divide 60,000 by 12, this comes out to be 5,000 rupees per month will be given to those interns. Moving on, here you can see this PM's internship scheme for 2024. Apart from this, for being eligible for this, the scheme will focus, or basically for being eligible for this, a candidate whose family income is below 8 lakh rupees for FY24 are eligible to apply for the scheme. And under this scheme, various startups will be provided with this job to provide the students, the youths, with skilling and these internship programs. Moving on, next is Union Defence Minister Rajnath Singh accorded the warm send-off to 7,000 km Vayu Veer Vijeta car rally to mark the 92nd anniversary of Indian Air Force. So Rajnath Singh, he is our Defence Minister, right? And he recently gave a warm send-off to Vayu Veer Vijeta car rally, right? That was from National War Memorial in New Delhi. Correct. Apart from this, remember why was this all event took place? The event took place basically to commemorate the 92nd anniversary of Indian Air Force, right? Also, the rally we are talking about, this Vayu Veer Vijeta car rally, this rally will be formally flagged off from Ladakh, that is Thoise in Ladakh, that is one of the highest altitude Air Force station, and it will be culminating at the Twang in Arunachal Pradesh. So we can say from, let me show you, must have been added the slide, yes, that is in Thoise in Ladakh. It will be starting position, and this rally will end where? It will be in Twang, Arunachal Pradesh. This will be the end point of this car rally that we are talking about. What is the name of that car rally? It is Vayu Veer Vijeta car rally. Correct. Apart from this, Indian Air Force, they have also organized an air show. Air show is basically an event where various aircrafts, planes, fighter jets took part, right? So this air show has been organized by Indian Air Force with the theme Saksham Shashakta Atmanirbhar, right? And this was during an event that was held in Chennai, Tamil Nadu at Marina Beach. If I ask you about Indian Air Force, can you tell me who is the Chief of Army Staff? Air Marshal Amar Preet Singh. He is the current Chief of Air Staff. Next, if we talk about this Vayu Veer Vijeta car rally, we will be seeing more than 50 air warriors here, including women, have left to Thoise, Ladakh, from where they will undertake the expedition to Taiwan. So in all the, also this is talking that where this will be from Thoise in Ladakh to Twang in Arunachal Pradesh. Next is Ministry of Labor and Employment and Amazon company. They have recently signed a memorandum of understanding that will enhance the employment accessibility in India. Basically, you will be seeing the getting job. How do you get a job? You apply for a job, you build your CVV, then you upload that CVV on various portals, and then the HR of that organization will, after looking at your resume, will give you a call, right? So for the same purpose, to make it more efficient, right, to provide more job opportunities to the youth of India, for this Ministry of Labor, Employment and Amazon, they have signed an MOU so that they can help create more jobs, correct, to make those individual people eligible for those jobs, to make them with various courses and so on. Apart from this, you will be seeing that the enhanced platform will offer various user-friendly interface for the job seekers,
correct, that will be inbuilt with various AI facilities. Next is international affairs. We are talking about the 79th session of the United Nations General Assembly that was held from 10th to 30th of September 2024, right? And we are talking about the 79th United Nations General Assembly session. And remember, recently Prime Minister Narendra Modi, he was also on a visit to USA and he addressed during this 79th session of United Nations General Assembly. Who was the president of this 79th session of United Nations General Assembly? So Philemon Yang, right? He is the former Prime Minister of Cameroon and was the president of the 79th session of United Nations General Assembly. There was a name for this summit. You can say that is the Summit of the Future. Summit of the Future, right? Then if we talk about the headquarter of United Nations General Assembly, where is it? It is in New York, USA. When was it founded? It was founded in 1945. Next, remember, Palestine takes seat among the UN member states at United Nations General Assembly. One of the most important point that you need to take a note of, right? Which country has taken seat among the UN member states at United Nations General Assembly? It will be your Palestine. Correct. Next, and if we say that why Palestinian, on what will be the benefit of this for their seat at the United Nations, that they will be able to take participation in United Nations General Assembly sessions. Various UN meetings and conference will be open to them. Correct. Moving on. Next is CSIR, that is your Council of Scientific and Industrial Research. They have signed a 5C agreement for global sustainable development at 2024 Science Summit. Right? So what does this 5C stands for? Connect, collaborate, coverage and convert. So CSIR, they have signed this 5C agreement for global sustainable development that was on 18th and 19th of September during the 9th edition of the Science Summit that was held at the United Nations General Assembly 79th session. So this question can also be asked, that which edition of the Science Summit was held at the United Nations, or 79th edition of United Nations General Assembly. So that was the 9th edition of the summit that was held. Moving on, if we talk about the Science Summit, it was organized by International Science Council and the partners from 10th to 27th of September. This is a premier global event that unites thought leaders, scientists, policymakers and various innovators to address the most pressing scientific technology challenges of our time. So as the name suggests, Science Summit, here we are talking about various technologies, various innovations, various research and development that has been taking place in the field of science. Next is India has signed an agreement to protect the marine biodiversity on high seas at United Nations General Assembly. Direct question. Next is India. We have joined a US-led mineral security finance network. Now, this will basically boost the cooperation and promote the information exchange and co-financing amongst various institutions from Indo-Pacific region and Europe. This will help our country to diversify and secure various critical minerals from nations such as Argentina, China, Chile, Australia, African countries, and these critical minerals, they are very helpful and economically it will be very beneficial for our country's development. Next is Minister of State Anupriya Singh Patel addressed the high-level side event at United Nations General Assembly. Can be asked directly. Next, we are talking about Piyush Goyal's visit to Vientiane, Laos People's Democratic Republic. So Piyush Goyal, who is our Union Minister of Commerce and Industry, visited Vientiane, Laos People's Democratic Republic. So he visited this Laos People's Democratic Republic. In that too, he visited Vientiane, right? And this was to participate in the 21st edition of the Asian India Economic Ministers Meeting, right? And the 12th edition of the East Asia Summit Economic Ministers Meeting. So he took part in these two editions. I repeat, the first was the 21st edition of the Asian India Economic Ministers Meeting. Let me show you here. The 21st edition of the Asian India Economic Ministers Meeting, and the second is the 12th East Asia Summit Economic Ministers Meeting that was held at the Lao People's Democratic
Republic. Right? Take a note of this. Moving on. Next is India's CDSCO became the affiliate member of International Medical Device Regulators Forum. So India has recently joined the International Medical Device Regulators Forum as an affiliate member, correct? And they have been appointed as an affiliate member as the Central Drug Standard Control Organization that comes under the Ministry of Health and Family Welfare, correct? Apart from this, you will be seeing that this membership, right, it will open various venues, means opportunities for collaboration with various regulatory authorities worldwide. So in simple terms, we can say this membership will enhance India's global collaboration in the medical devices regulation, correct? Also with this, we will be able to promote as well as market Indian medical products in the international market, correct? Next is banking and finance. SEBI, they have announced the new framework to curb the excessive speculations in stock market, right? That means SEBI, they have announced 6 measures to identify, or basically to identify the index derivative trading framework to curb the excessive speculations that are growing concerns about the various losses that are occurred by various individual traders, right? We have seen that after COVID-19, the number of traders, right, they have significantly increased in India. We are seeing that many people are now making various reels and videos about it, and that is being influencing a large audience in India. And even a report was released that in FNO, almost 95% of the individuals, they lose their money, and they are losing more than 1.5 lakh rupees in the FNO segment, correct? That is a huge amount of money that Indian are losing. Apart from this, you will be seeing that these new regulations, they will be implemented in phase manner. That will be coming into effect from 20th of November. Then if we talk about SEBI, who is the chairperson of SEBI, Madhabi Puri Boch, and the headquarters is in Mumbai, Maharashtra, correct? Then if we talk about these measures, these are important, right? These are the 6 measures we are talking about. First is upfront collection of option premium from buyers, right? So remember, SEBI mandated that the option premiums, right, these all regulations that have came into place is basically to curb the FNO options that we were talking about, right? That a large amount of public, they are investing and they are losing a large amount of money in FNO. So to curb them, these measures came into place, and here SEBI has mandated the collection of option premiums by buyers, by the trading members or the clearing corporations, and they will be coming into effect from 1st of Feb 2024. Second is removal of calendar spread treaty on the expiry day. What used to happen earlier was that both NSE and BSE, they used to have multiple expiries every day of the week, right? Now that has been closed. They can have only one expiry every week, right? That means, for example, if we are talking about Nifty, so Nifty will be having expiry, right, of 1 month now, correct? There won't be expiry every week for this Nifty. And similarly for Bank Nifty, your other options, right? So for example, mid cap, Sensex, and so on. Then third is intraday monitoring of position limits. SEBI has directed the stock exchanges to monitor the existing positions limit on the exchange derivatives, so that there can be so basically to monitor that, right, to avoid any risk of any illegal thing that is going on. This will be coming into effect from 1st of April. Then fourth is the contract size for index. It has been increased, and it is expected that it will be increased by almost 3 times. Say for example, earlier in one lot there were 15, or in one lot there were 15, correct? Now it has been increased from 15 to almost 45 in one lot,
correct, and also the amount of money that used to be used before, or we will be discussing it again, right? But remember, the contract size for index derivative has been increased almost 3 times, and it will be coming into effect from 20th of November. Next is rationalization of the weekly index derivative products, right? And this is also basically that coming into effect from 20th of October. And sixth is the increase in the tail risk coverage on the day of option expiry. This will also come into effect from 6th of or 20th of April, correct. And this basically mean, as per the new rules, the SEBI has increased the tail risk coverage by levying an additional income extreme loss margin of 2% for short option contracts. Next is REC. REC Limited has signed 3 lakh crore financing agreement with the government of Rajasthan for various power projects. I repeat, REC Limited, that was earlier known as Rural Electrification Corporation Private Limited. This is a Maharatna central public sector unit that has come under the Ministry of Power, right? So REC, they have recently signed a memorandum of understanding, and it was signed with the government of Rajasthan to provide financial support of up to 3 lakh crore rupees to fund the infrastructure projects in various in the state of Rajasthan, right? Under this MOU, you will be seeing that REC Limited will provide financial support of 50,000 crore rupees per annum. That has been increased from 20,000 crore rupees to fund projects across power and non-power infrastructure for a period of 6 years. On 10th of March, an MOU has been signed between the government of Rajasthan and REC Limited to finance 20,000 crore rupees annually till 2030. Correct. Then here you will be seeing MOU is expected to cover various state infrastructure projects, power projects, metros, roads, highways, airports, IT sector, oil refinery, port, waterways, and so on. If we talk about REC, where is the headquarter? It is headquartered in New Delhi, established in 1969. If we talk about Rajasthan state, who is the Chief Minister of Rajasthan? Bhajan Lal Sharma. Who is the Governor of Rajasthan? Hari Bahu Bagde. Correct. And there is a national park here in Rajasthan, that is Ranthambore National Park and Keolado National Park. Next is DFC. They have invested $272 million in India to boost the economic growth, right? So US International Development Finance Corporation, they have made a significant commitment of over $272 million to support India's growth and sustainability, right? And you will be seeing here that this investment includes key allocations such as $40 million loan to Mumbai, Maharashtra based APAC Financial Service Private Limited that aims to expand the loans to low income and micro enterprises. Also, another loan of $50 million has been given to Mumbai based Incred Financial Service Limited, and they will be helping the women led businesses grow. Apart from this $19.8 million loan to Aryatech platform, this investment will support the agriculture sector and so on. Correct. So a total of $272 million loan has been provided by DFC. So, and it has been invested in India to boost the economic growth. Next we are talking about economy and business. Tata Electronics and Taiwan's PSMC. What is PSMC? It is Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation. They have completed an agreement for the tech transfer to build India's first semiconductor fabrication unit. I repeat, TEPL, that is Tata Electronics Private Limited, take a note of this. They have completed this agreement with Taiwan based PSMC, that is Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation, and here they will be providing the design and the construction support to build India's first AI-enabled greenfield fabrication unit that will be located in Dholera, Gujarat. Right? This will be set up with a total investment of 91,000 crore rupees, that is almost $11 billion. This fabrication unit will create more than 20,000 direct jobs and indirect skilled jobs. Correct.
and this semiconductor facility, it will be manufacturing chips for power management integrated circuits, for display drivers, for microcontroller units, and high performance computing logic. Moving on, next we are moving to Obituary. Renowned Indian English poet and former IPS officer Keki N. Daruwala has recently passed away. Correct? And he was a very famous English poet also. He passed away at the age of 87 in New Delhi. Born in 1937 in Lahore, British India, that is now in Pakistan. Next is important is World Heart Day. It is observed on 29th of September. It is to create awareness about the cardiovascular disease that include heart disease, strokes, and to promote action to prevent, detect, and manage the cardiovascular disease. There is a theme for this day, that is use heart for action. This is the theme for the World Heart Day. Correct? And this day was observed for the first time in the year 2000. Then this day is observed by World Heart Federation. World Heart Federation, the headquarters of which is located in Geneva, Switzerland. Next is state news. Telangana became the first state to launch a chapter of Niti Aayog's Women Entrepreneurship platform. Right? So it is Telangana state that has became the first state. They have launched their own state chapter of Niti Aayog's Women Entrepreneurship platform. Right? This platform will be basically what will be there in platform, right? So this will be talking about various ways that women entrepreneurship can be enhanced. Here the focus will be on mentoring, financing, that how they should finance their projects, their ventures, right? Their skills, how they should improve them. Correct? So this particular chapter will be focusing on this. Also, the main focus here will be so that the women in Telangana that comes from both rural as well as urban areas, they can have the entrepreneurship skills and they can grow their businesses. Right? So if we talk about Telangana state, who is the chief minister here? Revanth Reddy. He is the chief minister of Telangana. And what is the capital of Telangana? It is Hyderabad. Correct? Also, there is a Ramappa temple here that you need to all remember. Then if we talk about Niti Aayog, right, it's this organization's first state chapter has been released by Telangana. For Niti Aayog, who is the chief executive officer? B.V.R. Subramaniam. Chairperson is the current Prime Minister of India. So right now it is Narendra Modi, and this was established in 2015. Next is Tripura government. They have launched CM Saath scheme to help malicious students in higher education. So we can say this is a financial assistance scheme. Under this scheme, a financial assistance of 60,000 rupees, that is 5,000 rupees per month, will be provided to a total of 200 students, including 100 at the Madhyamik level for 2 years and 100 at the higher secondary level for 3 years. Right? So it is Tripura government. They have launched this Chief Minister Saath scheme to help malicious, that are the brilliant students in higher education. And a financial assistance of 6,000 rupees will be provided here. That comes to 5,000 rupees per month for almost 200 students. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision, one-liners. PM Modi laid the foundation stone and inaugurated various projects at Hazaribagh in Jharkhand. Then government has launched Prime Minister's internship scheme. Vayu Veer Vijeta car rally has taken place, and it was to mark the 92nd anniversary of Indian Air Force. Then Ministry of Labour and Employment and Amazon, they signed an MOU so their employment accessibility, that the individual who wants a job, they can reach the person who is providing job easily, right? That is accessibility. For this, an MOU has been signed. Then 79th session of United Nations General Assembly was held from 10 to 30th of September 2024. Then Ministry of Commerce and Industries Minister Piyush Goyal visited Laos People's Democratic Republic.
Then India's CDSCO became the affiliate member of International Medical Device Regulators Forums to enhance the medical device sector in India. Then SEBI has announced a new framework to curb the excessive speculation in stock market, for which 6 important rules has came out. Then REC Limited, they have signed 3 lakh crore rupees financing agreement with the government of Rajasthan for power projects. DFC, they have invested $272 million in India to boost the economic growth. Next is Tata Electronics and Taiwan's PSMC. They have completed an agreement for tech transfer to build India's first semiconductor fabrication unit that will be located in Dholera, Gujarat. Then renowned English poet and former IPS officer K.K. M. Daruwala recently passed away. World Health Day observed on 29th of September, and Telangana became the first state to launch a chapter of Niti Aayog's Women Entrepreneurship program. This will be helping the women entrepreneurs both in rural and urban areas, right, with various skills, financing skills, correct, mentoring and so on. Then it is Tripura government. They have launched Chief Minister's Saath scheme to help the meritorious students in the higher education. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be very beneficial in your understanding. Next, when was International Day of Sign Languages observed across the globe to support and protect the linguistic identity? It is 23rd of September. We observe International Day of Sign Languages, that is observed across the globe to support and protect the linguistic identity. Also remember, the first ever, or before moving on, what are these sign languages? Sign languages are basically the gestures that are made so that the deaf people, those who cannot hear, they can understand what we are trying to communicate. You must have seen on multiple channels, also on news channels also, especially in USA, when there is a information being provided to the general public, the person is also on the side. You will be seeing a person providing information using the sign languages. So it is for the deaf persons, correct? And it is a blue ribbon that symbolizes this International Day of Sign Languages. Next, which of the following schemes comes under Beti Bachao Beti Padhao campaign? It is Sukanya Smriddhi Yojana, right? This is the name of the scheme that comes under Beti Bachao Beti Padhao campaign. Around 4.5 lakh accounts of Sukanya Smriddhi Yojana has been opened in the post office of North Gujarat region. Next, name the exercise that was recently organized by the National Disaster Management Authority and Southern Command of the Indian Army in Chennai. It is IKEA, right? So NDMA, in collaboration with the Southern Command of the Indian Army, they organized a 2-day national symposium by the name Exercise IKEA. That is a disaster management exercise. It was held in Chennai. Next, which ministry has recently launched the second edition of the Tobacco Free Youth Campaign 2.0 in New Delhi? It is Ministry of Health and Family Welfare, right? They have launched the second edition of the Tobacco Free Youth Campaign 2.0 in New Delhi. This was held at Lady Hardinge Medical College in New Delhi during the event which was launched. This campaign will be running, that is your Tobacco Free Youth Campaign, for 60 days, and as the name suggests, to make sure that the universities, the colleges, the educational institutions are free from tobacco and people should not participate in consuming tobacco. Also, the participants of this event will take a pledge, that is, say no to tobacco. Next, which country has recently assumed the chairmanship of the Asian Organization of Supreme Audit Institutions for 24 to 27 term? So which country has assumed the chairmanship here? It is our India that has assumed the chairmanship here of this Asian Organization of Supreme Audit Institutions for 2024 to 2027 term, and Girish Chandra Murmu has been serving as the 14th Comptroller and Auditor General of India since August 2020. Apart from this, the 16th assembly of this ESO SCI was hosted by the Chief Comptroller General of India that was held in New Delhi. Next is which state has recently started 530 crore rupees water supply project funded by Asian Development Bank to improve the drinking water infrastructure? It is Tripura, right? Manik Shah, he is the Chief Minister of Tripura, and he laid the foundation for the Asian Development Bank funded 350 crore rupees project that is for the supply of clean drinking water.
This project will be helping more than 12 cities of Tripura, and you will be seeing here various communities of Tripura will also be taught about the water harvesting techniques, irrigation techniques, so that they can benefit and they can be skilled in these water harvesting techniques. Next, which public sector bank has recently partnered with easemytrip.com to launch India's first co-branded travel debit card? That is your Bank of Baroda, right? So Bank of Baroda partnered with easemytrip.com to launch India's first co-branded travel debit card. This is basically for the frequent travelers and those spending on entertainment and lifestyle. Next is students, you have to give me 3 current affairs that are related to sports, and in sports too that should be related to football. So that's all for the day, students. If you find the session, do hit the like button and also comment below and let us know what are your views for the same, right? And students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one stop solution for current affairs. And students, now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 8 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हम बात करेंगे वेरियस प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हरीजाबाग झारखंड में। देन हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम की। देन हम बात करेंगे वायु वीर विजेता एक कार रैली जो हुई टू मार्क 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देन हम एक एमओयू की बात करेंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का बात करता है। तो ये सारी चीज़ें एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन वीडियोज़ से। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। पीएम मोदी ने अभी हमने देखा कुछ फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेट किए कई प्रोजेक्ट्स हरीजाबाग झारखंड में। जो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है वो है, आपको जो याद रखना है वो है दज गुआ प्रोजेक्ट, राइट। ये दज गुआ क्या है? बेसिकली धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। ये 79,156 करोड़ की लागत से लॉन्च किया गया है। एंड इस स्कीम के अंदर आप देखेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उसकी हेल्प करने की यहाँ पे बात की गई है, करेक्ट। उनको ग्रो करने की यहाँ पे बात की गई है, उनको एम्पावर करने की ये बात की गई है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे पीएम जनमन स्कीम को लॉन्च किया गया, वर्थ 1360 करोड़ रुपीज़, राइट। इसके आप देखेंगे जनमन स्कीम के अंदर ये है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान। अगर इस सबसे पहले अगर हम देखें दजगुआ स्कीम की, इसके अंदर आप देखेंगे 63,843 विलेजेस, 549 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 5 करोड़ से भी ज़्यादा ट्राइबल लोगों को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा, करेक्ट। उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं उनको फिल किया जाएगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन, लाइवलीहुड में, करेक्ट। देन अगर मैं बात करूँ पीएम जनमन स्कीम की, इसके अंदर हम देखेंगे 250 मल्टीपर्पज़ सेंटर्स, 10 स्कूल्स, 1380 किलोमीटर रोड, 120 आंगनवाड़ीज़ को सेटअप किया जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी 75,800 हाउस होल्ड्स की, वहाँ पर प्रॉपर बिजली पहुँचाने के लिए जो भी तारे डालने का काम है वो किया जाएगा। इसी के साथ साथ 275 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड 500 आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी यहाँ पे सेटअप करने की बात की गई।
नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इस इंटर्नशिप स्कीम के अंडर लोगों को, बच्चों को यहाँ पे बेसिकली उनको ग्रो करने के लिए हेल्प किया जाएगा एंड उनको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। उनको वेरियस स्टार्टअप्स के साथ यहाँ पे एसोसिएट किया जाएगा, जहाँ पर उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंडर। एंड इंटर्नशिप के साथ साथ 60,000 रुपये सालाना यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब अगर हम देखें तो 5,000 रुपये महीने के यहाँ पे उन बच्चों को मिलेंगे इंटर्नशिप करने के लिए अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। यहाँ पे वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपये से कम की रहेगी। इसके लिए सरकार के द्वारा 8,800 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च भी करने की बात की गई। एंड यहीं पे आप देखेंगे इनका टारगेट भी है कि 1 करोड़ यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना मार्च 2029 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एंड ये जो बच्चे रहेंगे ना, बेसिकली 21 से 24 साल के बच्चे रहेंगे यहाँ पे। एंड 500 कंपनियों के साथ यहाँ पे टाई अप है इनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने भी वार्म सेंड ऑफ किया 700 किलोमीटर लंबे 7,000 किलोमीटर लंबे वायु वीर विजेता कार रैली को टू मार्क द 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये एक कार रैली है, 7,000 किलोमीटर की ये कार रैली रहेगी। ये कार रैली कहाँ से कहाँ तक रहेगी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। थॉई से, राइट, ये कहाँ पर है, लद्दाख में। यहाँ से लेके ये आपकी कहाँ तक जाएगी, घूमते फिरते ऐसे तावांग अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, 7,000 किलोमीटर की ये कार रैली रहेगी जिसका नाम है वायु वीर विजेता। इसको फ्लैग ऑफ किया गया या फिर सेंड को मतलब भेजा गया, स्टार्ट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। करेक्ट। एंड ये बेसिकली किस लिए किया गया सब, टू मार्क द 92nd एनिवर्सरी किनकी, इंडियन एयर फोर्स की। अगर यहीं पे आप इंडियन एयर फोर्स के पहले तो आप ये देख सकते हैं थोई से लद्दाख से तावांग तक जाएगा, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इस कार रैली का। एंड जो फिनिशिंग पॉइंट रहेगा वो कौन सा है आपका, तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट। इसी के साथ साथ एक एयर शो भी यहाँ पे कराया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसकी थीम है सक्षम, सशक्ता, आत्मनिर्भर। राइट, कहाँ पर हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ, एट मरीना बीच। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है फिर आपका मोल। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके द्वारा भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया अमेजॉन के साथ, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट एसेसिबिलिटी है ना उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे ऑनलाइन जॉब चाहते हैं, राइट, वो किसी कंपनी अमेजॉन में काम करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, राइट, तो उनको पहले क्या करना पड़ता है, इनकी वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए उनको अपना सीवीवी रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, राइट। इस एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए, इसको और एसेसिबल बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए, ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है बच्चों तक ईजी पहुँच सके एंड उसको वो अप्लाई भी और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए ये MOU साइन किया गया है इंडिया और अमेजॉन के बीच में। इससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यहाँ पर लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा, राइट। उनको बताया जाएगा कि कैसे वो अपनी जॉब सीकिंग एक्सपीरियंस को और बेटर कर सकते हैं। AI आ गए हैं तो AI का यूज़ किया जाएगा वेरियस वेबसाइट्स में, ताकि इस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो अभी हम बात करेंगे 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। 10 से लेके 30 सितंबर तक ये आपका इवेंट हुआ था, 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड ये कहाँ पर हुआ था, USA में। इवन अगर आप लोग को कल का सेशन याद हो तो हमने बताया था कि PM मोदी ने एड्रेस किया था एट दिस 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये क्या था, समिट ऑफ द फ्यूचर में, राइट। इस इवेंट के दौरान जो कि 22-23 सितंबर को था, PM मोदी ने एड्रेस किया था इसको, करेक्ट। इसी के साथ साथ जो ये 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, वो रहेंगे फिलेमॉन यांग। ये कौन है, फिलेमॉन यांग, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कैमरून के, ठीक है। एंड कहाँ पर हुआ था ये समिट, हमने देखा न्यूयॉर्क USA में हुआ था 10 से 30 तक। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, पैलेस्टीन ने अभी सीट ले लिया अमंग द UN मेंबर स्टेट्स एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 79 सेशन। इससे क्या होगा, जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अब पैलेस्टीन यहाँ पे पार्ट ले सकेगा। इसके अलावा CSIR ने ऑर्गेनाइज कराया 5C फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट 2024 साइंस समिट। देखो साइंस समिट क्या होता है, बेसिकली साइंस समिट आपका इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था 10 से 27 सितंबर तक। इसका बेसिक एम क्या था कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, न्यू इक्विपमेंट्स के लिए, इस नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए नए यूज़ केसेस बनाने के लिए, थ्योरीज डेवलप करने के लिए, राइट, ये साइंस समिट का आयोजन किया जाता है। तो इसी के दौरान CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया CSIR फॉर कनेक्ट, कोलैबोरेट, कवरेज एंड कन्वर्ट को, ताकि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस में रखा जा सके एंड इसको अपनाया जा सके। इवन जो ये आपकी साइंस समिट हुई थी ना, ये 9वां एडिशन था साइंस समिट का, ये भी याद रखेंगे। ये क्या था? 9th एडिशन ऑफ द साइंस समिट। नेक्स्ट एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया ने साइन किया एक अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑन द हाई सीज एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देन इंडिया ने ज्वाइन किया US लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क को, जिससे क्या होगा, इंडिया अब सप्लाई कर सकेगा, इंपोर्ट करा सकेगा वेरियस क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीकन नेशन से। इवन जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज रहेगी इससे, वो भी यहाँ पे ईजिली हो सकेगी इन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। फिर इसी के अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया सिंह पटेल, इन्होंने एड्रेस किया हाई लेवल साइड इवेंट को एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने विजिट किया लाओ पीपल्स डोमेस्टिक रिपब्लिक में, राइट। इनका जो विजिट करने का मेन एम था वो क्या था, इन्होंने 20 से 21 सितंबर में यहाँ पे विजिट किया एंड इनको अटेंड करनी थी 21वीं एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट एज वेल एज 12वां एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे इनको अटेंड करना था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे विजिट किया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा याद रखेंगे, इन्होंने कई सारी बायलेटरल मीटिंग्स भी यहाँ पे में पार्टिसिपेट किया विद हिज काउंटर पार्ट विद वेरियस कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया CDSCO बिकेम एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। देखो, इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे भी ना बहुत हेल्प कर रहा है पूरी दुनिया का। इवन हम इंडिया में देखते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे खुद बनाने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा, इनको खुद मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जो भी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स हो गए, पार्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, उनको यहाँ पे खुद बनाने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा। करेक्ट। तो इवन अब हम देखेंगे इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस के जो रेगुलेटर्स होते हैं कि किस तरीके के डिवाइस होने चाहिए, राइट, उनको क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए ताकि हम वो डिवाइसेस बनाएं। करेक्ट। तो उन डिवाइसेस के रेगुलेटर फोरम पर अभी इंडिया एक एफिलिएट मेंबर बन गया है। करेक्ट, मार्क करेंगे, इंडिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम को एज एन एफिलिएट मेंबर एज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। करेक्ट, इससे क्या होगा, बेसिकली इंडिया जो मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस है ना, उसमें यहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर सकेगा कि जो भी मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस आएंगे उसमें इंडिया का से रहेगा, यहाँ पर इंडिया उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देख सकते हैं बेनिफिट्स क्या रहेंगे इस मेंबरशिप के। इट विल स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट, रिड्यूस करेगा कम्प्लेक्सिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपके इक्विपमेंट्स होंगे मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, एज वेल एज इंडिया यूटिलाइज कर सकेगा इन डॉक्यूमेंट्स को ताकि अपनी जो मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। सेबी ने अभी अनाउंस किए नए फ्रेमवर्क टू कर्ब द एक्सेसिव स्पेकुलेशंस इन द स्टॉक मार्केट। देखो, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी कि एफएनओ मार्केट में ना बहुत सारे ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द जो इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। स्पेशली 1.5 लाख से ऊपर तक का उनका लॉस देखने को मिल रहा है इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो इसी को ख़त्म करने के लिए सेबी के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए, लेकिन क्या वो आपके हिसाब से लगता है क्या वो स्टेप्स ठीक है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। ये 1 फरवरी से लागू हो जाएगा कि जो भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, उसका जो प्रीमियम है आपको ये कंपनी पहले ही उससे अपफ्रंट कलेक्ट कर लेंगी। देन रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डेट, कि जो आप कैलेंडर स्प्रेड बना लेते थे, मतलब आप ऑप्शन बेच भी देते थे और ऑप्शन बाय भी कर लेते, उसको यहाँ पे ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। स्प्रेड बनाने का काम ख़त्म किया जा रहा है ऑन द एक्सपायरी डे, राइट, 1 फरवरी 2025 से। देन इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, जो भी पोजीशंस बनी जाएंगी इंट्राडे में उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा सेबी के द्वारा, ताकि उसमें देखा जाए कि कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, क्या मार्केट को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। देन 4th आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ये आपका 20 मार्च से लागू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज में क्या होगा, पहला लॉट 25 का होता था,
कहीं 15 का होता था, कहीं 10 का होता था, अब उसको 2 to 3 टाइम्स यहाँ पे कर दिया जाएगा। अगर लॉट 2 to 3 टाइम्स कर दिया जाएगा तो जो भी आपके मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। मान लो पहले आप 10,000 से करते थे, कुछ लॉट्स बाय करते थे, वही बढ़कर अब आपके ऑलमोस्ट 25 से 30,000 रुपये लगेंगे। देन वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट का रैशनलाइजेशन हो जाएगा। आप देखते थे पहले हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी, चाहे वो बीएससी की, चाहे वो एनएससी की, कोई ना कोई एक्सपायरी हमें देखने को मिलती थी। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे अब एक दिन आपकी एक ही एक्सपायरी रहेगी और महीने में एक ही एक्सपायरी रहेगी। जैसे मान लो निफ्टी की बात करें तो पूरे निफ्टी के महीने में एक एक्सपायरी रहने वाली है, बैंक की निफ्टी की पूरे महीने में एक एक्सपायरी रहने वाली है, एंड सो ऑन। एंड लास्ट आ जाता है कि जो टेल रिस्क कवरेज है ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। ये भी दोनों 20 नवंबर को लागू की जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि एफएनओ सेगमेंट में जो ट्रेडर्स हैं उनको रोका जा सके इसमें पार्टिसिपेट करने से। नेक्स्ट आ जाते हैं आरईसी लिमिटेड। इन्होंने साइन किया 3 लाख करोड़ का फाइनेंसिंग अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ ये एमओयू साइन किया है ताकि 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइनेंशियल इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे हम देखेंगे कई सारे प्रोजेक्ट्स, पावर, मेट्रो, रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, आईटी, स्टील, पोर्ट्स, वाटरवेज, फाइबर, नेम इट, सारे सेक्टर्स में यहाँ पे इस पैसे को लगाया जाएगा ताकि राजस्थान को ग्रो करा जा सके। इनको स्मार्ट सिटी भी यहाँ पे कई सारी दी जा सके। आरईसी की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? विवेक कुमार देवांगन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1969 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। राजस्थान की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भजन लाल शर्मा, गवर्नर हरिभाऊ बागड़े, नेशनल पार्क रहेगा रणथंबोर नेशनल पार्क एंड कोकियोलाडो नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डीएफसी। डीएफसी क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने इन्वेस्ट किया $272 मिलियन इन इंडिया ताकि बूस्ट किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे एंड सस्टेनेबली को फोकस किया जा सके। इसी के अलावा हम देखेंगे कि हम जानते हैं पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग करेक्ट अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जो ग्लोबल एफर्ट्स है फाइटिंग क्लाइमेट चेंज के लिए उसको और ज़्यादा बेटर किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं क्लाइमेट से लड़ने के लिए हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पे डीएफसी ने $272 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई इंडिया में ताकि सस्टेनेबली इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो $40 मिलियन यहाँ पे दिए गए एपीएसी फाइनेंशियल लिमिटेड को, जिसका एम रहेगा कि जो लो इनकम एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है ना उनको फंडिंग दी जा सके। फिर दूसरा आ जाता है डीएफसी का फोकस रहेगा $50 मिलियन लोन दिया जाएगा मुंबई बेस्ड इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज को ताकि जो वीमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके ग्रो करने के लिए। इसी के अलावा आप देखेंगे $19.8 मिलियन दिया गया आर्याटेक प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड को ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सके, ज़्यादा बेटर हमें ग्रोथ देखने को मिल सके। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे डीएफसी ने $272 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ में। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान के पीएसएमसी ने कंप्लीट किया अग्रीमेंट फॉर टेक ट्रांसफर टू बिल्ड इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट ढोलेरा गुजरात में होगा। एंड यहाँ पर इस फैब्रिकेशन यूनिट में कई सारी हमें सेमीकंडक्टर की चिप्स देखने को मिलेंगी फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। जैसे बात करें कंप्यूटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, एआई के लिए, ऑटोमेशन के लिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक के लिए चिप्स यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। फिर इसी के अलावा देखेंगे तो $11 बिलियन मतलब रफली देखें तो 91,000 करोड़ रुपीस की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगी। एंड इस इन्वेस्टमेंट से, इस प्लांट से 20,000 से भी ज़्यादा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्किल जॉब्स यहाँ पे जनरेट की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। रिनोन इंडियन इंग्लिश पोएट एंड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर KK दारूवाला, इनका रिसेंटली निधन हो गया 87 की एज में इन न्यू दिल्ली। इनका जन्म 1937 में हुआ था, लाहौर ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड हार्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। इसका एम है कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होती है ना उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स के बारे में, इनके बारे में अवेयर कराना एंड इनको प्रिवेंट करना एंड मैनेज करना। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हार्ट डे की। पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया था? सन 2000 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, याद रखेंगे स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी तेलंगाना स्टेट के द्वारा याद रखेंगे पहला इनका स्टेट चैप्टर लॉन्च किया गया ऑफ नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, कि वीमेंस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को लीड करने के लिए, अब वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें, राइट। उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जा सकें, फाइनेंस के बारे में बताया जा सके, मार्केटिंग के बारे में बताया जा सके, उनको प्रॉपर मेंटरिंग की ज़रूरत है वो यहाँ पे मेंटरिंग दी जा सके, ताकि रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन एरियाज़ में जो भी वीमेन है तेलंगाना स्टेट में, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके एंटरप्रेन्योरशिप की। यहीं पे याद रखेंगे जो तेलंगाना है ना, ये वो पहली स्टेट बन गई है जिनके द्वारा अपना स्टेट चैप्टर लॉन्च किया गया है नीति आयोग के वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लेके। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रहेंगे, कैपिटल हैदराबाद, एंड ककातीय रमप्पा टेम्पल यहाँ पर इनका यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नीति आयोग की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, BVR सुब्रमण्यम, चेयरपर्सन रहेंगे नरेंद्र मोदी, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया 2015 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर त्रिपुरा गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर 7 स्कीम को, तो कि जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं ना उनको हायर एजुकेशन में हेल्प किया जा सके। यहाँ पर उनको 60,000 रुपये सालाना प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब अगर हम देखें तो महीने के 5,000 रुपये यहाँ पर इनको मिलेंगे इन स्टूडेंट्स को, एंड 200 ऐसे बच्चों को यहाँ पे ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को कवर कर सकें, उनके फाइनेंस में हेल्प की जा सकें, एंड जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो ध्यान उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। करेक्ट, तो मार्क करके चलेंगे, ये त्रिपुरा की स्कीम है, त्रिपुरा के गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह के द्वारा लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर 7 स्कीम, एंड ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी मेरिटियस स्टूडेंट्स, मतलब जो होनहार बच्चे होते हैं, फॉर देयर हायर एजुकेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर। पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर हजीराबाग झारखंड में। देन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम 2024 की। वायु वीर विजेता कार रैली यहाँ पे लाई गई, करेक्ट, ऑन 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड अमेजॉन ने साइन किया एक MOU टू एनहेंस एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। 79 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें 10 से 30 सितंबर तक हुई। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में अभी विजिट किया। देन इंडिया के CDS COE एफिलिएट मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम के। सेबी ने अनाउंस किया नया फ्रेमवर्क टू कर्ब एक्सपेसिव स्पेकुलेशन इन स्टॉक मार्केट। REC लिमिटेड ने 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइनेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। DFC ने इन्वेस्ट किया $272 मिलियन इन इंडिया टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। देन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ताइवान TSMC ये कंप्लीट करेंगे पहला अग्रीमेंट फॉर टेक ट्रांसफर टू बिल्ड इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, जो कि ढोलेरा गुजरात में होगा। 20,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। देन इंडियन इंग्लिश पोएट एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर KKN दारूवाला, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, या फिर हम बोलें तेलंगाना स्टेट वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने अपना एक स्टेट चैप्टर लॉन्च किया है ऑन नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। दैन त्रिपुरा गवर्नमेंट ने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर 7 स्कीम को लॉन्च किया ताकि जो मेरिटियस जो होनहार बच्चे हैं उनकी हायर एजुकेशन में उनको हेल्प किया जा सके। 200 ऐसे बच्चों को यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी और 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। हु वॉज और व्हेन वॉज वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 22 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे। पूरे वर्ल्ड में जो रिवर्स की इंपॉर्टेंस है, राइट, एंड उनके कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। वर्ल्ड रिवर्स डे 22 सितंबर को। इसी के अलावा याद रखेंगे पहला वर्ल्ड रिवर्स डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2005 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट वर्ल्ड राइनो डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं, ये भी हम 22 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसी के अलावा याद रखेंगे राइनो की 5 स्पीशीज को ग्लोबली प्रोटेक्ट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड इंडिया में अगर हम देखें राइनोज असम में, काजीरंगा सेंचुरी में, वेस्ट बंगाल में एंड यूपी में हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे और 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्रोजेक्ट। CO2 से मेथनॉल को बनाया जाएगा ताकि जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में उसको कम किया जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए एक प्लांट सेटअप किया गया है, कहाँ पर,
पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? थर्मेक्स लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे सेटअप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट्स फ्लैश पे के नाम से? तो पेयू के द्वारा ये फ्लैश पे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान, जो कि 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इन मुंबई महाराष्ट्र इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली टॉप्ड द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय फसाई? तो किस स्टेट के द्वारा टॉप किया गया छठे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जो कि फसाई के द्वारा रिलीज किया गया? तो केरला स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मूवी जिसको अभी जो एंटर कर गई इन द 97th अकेडमी अवार्ड, जो कि हैं ऑस्कर्स 2025 के, फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इंडिया की लापता लेडीज वो मूवी का नाम है, जो कि ऑस्कर्स 2025 में एंटर कर गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस स्पेस कैप्सूल का नाम बताओ जो कजाकिस्तान में लैंड किया, जिसमें 2 कॉस्मोनॉट्स थे रॉसकॉस्मॉस के, जो कि हैं निकोलाई क्लिचब एंड ओलेग कोनेको, एंड नासा की एक एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन थी। ये इंटरनेशनल स्टेशन से वापस आए। किस स्पेस कैप्सूल की मदद से आए? तो वो है सोयूज MS-25। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ रूमी 1, ये रूमी 1 क्या है? ये रूमी 1 इंडिया के द्वारा ही ये रीयूजेबल रॉकेट है, राइट? पहला फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। अगर मैं बात करूं दाइची 4 जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, दाइची 4। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंपनी द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज दैट इज DIPS इन्होंने रिसेंटली हैंडओवर किया क्रिटिकल हाई ऑल्टीट्यूड सस्टेनेंस टेक्नोलॉजी को? तो किस कंपनी को इन्होंने ट्रांसफर किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन के द्वारा लॉन्च की गई बुक का टाइटल, जो कि है खाकी में सिथाप्राज्ञा एक IPS अधिकारी की स्मृतियां एवं अनुभव। बेसिकली ये अनिल रतूरी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है पुलिस ऑफ उत्तराखंड के, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। इस बुक में बताया गया है कि जो IPS ऑफिसर या फिर पुलिस में जो भी लोग भर्ती होते हैं उनकी कैसे लाइफ जर्नी रहती है, उनको क्या पेशेंस सीखना पड़ता है अपनी लाइफ में इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उसके ऊपर इस बुक में दर्शाया गया है। पूछा जा रहा है किन के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया? तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। साइन लैंग्वेज बेसिकली जो डेफ लोग हो जाते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए ये यूज़ होता है। हाथों से जेस्चर किए जाते हैं, उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं, ताकि लोगों को बताया जा सके, कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सके, कम्युनिकेशन की जा सके। इवन आप USA में देखेंगे तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे साथ ही साथ साइन लैंग्वेजेस की जाती हैं, जेस्चर्स किए जाते हैं, जो दर्शाता है साइन लैंग्वेज को, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके जो कि सुन नहीं सकते। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल भी ऑब्जर्व किया जाता है 23 से लेके 29 सितंबर तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर आती है? तो इसमें से अगर हम देखें, सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर आती है। नगला, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा एंड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा चेन्नई में भी कौन सी एक्सरसाइज कराई गई? वो है रिमपैक। रिमपैक एक्सरसाइज का क्या फुल फॉर्म रहेगा? सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ, रिमपैक नहीं, आईक्या उस एक्सरसाइज का नाम है, जो कि अभी NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज कराई गई। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में इस एक्सरसाइज को कैरी आउट कराया गया। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क पार्ट। आपको 3 करंट अफेयर्स बताने हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स में भी किसके बारे में? फुटबॉल के बारे में बताना है। तो दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखेंगे, आपको हमारी वीडियो अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, हमारी क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं, एंड क्विज़ के साथ साथ आप अगर हमारा कोर्स लेके हमारी PDF पढ़ रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी लर्निंग में कितना ज़्यादा बढ़ावा आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।